के जन्म की तारीख और स्थान को साबित करने, किसी शैक्षणिक संस्था में दाखिले, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, मतदाता सूची तैयार करने, विवाह रजिस्ट्रीकरण, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी कानूनी या स्वायत्त निकाय में किसी पद को नियुक्त करने, पासपोर्ट जारी करने, कोई आधार नंबर जारी करने तथा अन्य प्रयोजन के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा पब्लिक सुविधा में वृद्धि करे और देश में जन्म की तारीख और स्थान को साबित करने के लिए दस्तावेजों को आसान करता है। महोदय, बहुत लंबी प्रक्रिया को छोटा करने के लिए इस प्राविधान को लाया गया है। महोदय, पहले क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता था अथवा जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका प्रमाण पत्र लेने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। महोदय, कल्पना करिए किसी के घर में कोई कड़ी मौत हो जाती है और कड़ी मौत हो जाने के बाद अगर वह जल्दी में व्यस्तता के कारण मृत्यु का प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकता अथवा जन्म लेने में देरी हो जाने पर अगर लेट होता था तो उसके लिए तमाम दस्तावेज देना पड़ता था, नोटरी हलफनामा भी देना पड़ता था। लेकिन इस कानून में इस बात को सरल कर दिया गया है कि अगर आपको 30 दिन अथवा 1 वर्ष से ज्यादा अगर समय हो जाता है और आपने अपना जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवाया तो आपको स्वैच्छिक आपको खुद से प्रमाण देना पड़ेगा, कहीं आपको लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो कानून माननीय मंत्री जी लेकर के आए हैं ये सबकी भलाई के लिए कानून है। अभी विपक्ष के लोग चले गए, उनको यहाँ पर रहना चाहिए था। महोदय, ब्रिटिश हुकूमत के बाद देश की आजादी के बाद से जनता ने सबसे ज्यादा सेवा करने का अधिकार कांग्रेस को दिया था। लेकिन महोदय, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस जनता ने कांग्रेस के ऊपर इतना विश्वास किया था, कांग्रेस ने उतना ही उसके साथ विश्वासघात करके उनकी पीठ पर छुरा भोंकने का भी काम किया है। महोदय, यह बिल पहले भी आ सकता था, यह बिल पहले की सरकार के लोगों को भी लाना चाहिए था। लेकिन मैं बधाई देना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो जनता की अच्छाई के लिए, जनता की भलाई के लिए और जनता को सुख से रहने के लिए उनको कम दौड़ना पड़े, उनको आसानी से उनका काम हो जाए, इसके लिए यह सरकार जो बिल लेकर के आई है इसमें बिल का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद सीमा जी। ऑनरेबल सुभाष चंद्र बोस पिल्ली, ऑनरेबल सुभाष चंद्र बोस पिल्ली, प्लीज। ऑनरेबल सुभाष चंद्र बोस पिल्ली, प्लीज। Honorable Chairman sir, thanking you for this opportunity. I have no disagreements with the intent and the nature of this bill. I would like to voice certain ambiguities and express my congratulations to the government on certain points. When the population of our country is growing, and it is necessary to have dedicated person to oversee matters related to births and deaths. The introduction of national database, which is to be maintained by the Registrar General, is welcome. Sir, this bill states that the national database can be made to other authorities preparing, manufacturing, maintaining other database. These will be notified by the government and can include the population register and electoral rolls among others. The bill also states that the use of national databases will be approved by the center, while the use of the state database is subject to the state approval. It can be made available to other authorities dealing with the other state databases upon prior notification of the state government. Sir, while such steps keep federal nature of the country intact by enabling both the center and state to work in tandem, it is not defined what type of authorities the national database can be made available to. This ambiguity creates fear in the minds of the people who are vulnerable to having sensitive data misused and leaked. I request the government clarify and certain what they mean by other authorities and lay down a set of steps detailing how this data will be protected to prevent any misuse. Providing data, date and place of birth. I appeal the government for mandating
that birth and death certificates can be used to prove the data and the place of birth for persons born on or after amendment comes into effect. The day-to-day task administration, such as the preparation of voter lists and admissions into education institutions would become smoother. However, the bill also states that the place of birth in birth certificate can be used for purpose determined by central government. This is vague term as it does not define to complete usage possible and a later date. This may be infiring on person's right to lead unintentional exclusions. I request the government to prepare the consented list of users for such information and add that it so may be looked at and judged its entity. Thanks to the government setting up at a stipulated time 7 days to provide extracts of prescribed information to the registration of birth and death to the persons who registered it on behalf of YSR Congress Party. I wholeheartedly support this bill, sir. Dr. M. Thambi Duraiji. Thank you, Deputy Chairman, sir, for giving the opportunity to participate on my ADMK party. The bill moved by Home Minister further to amend the Registration Births and Deaths Act 1969 as passed by Lok Sabha. Taken consideration, sir. Sir, I want to make it based on the consultation held with the state governments, general public, and other stakeholders. Union Government proposed to amend certain provisions of the Act in the form of bill, namely Registration of Birth and Deaths Amendment Bill 2023. Sir, now the digital system has come. We have to perfectly prepare the death and birth and death certificates. Sir, why I'm telling, so one, misuse of power in Tamil Nadu is taking place. For example, preparation of the voter list. The voter list in Tamil Nadu, especially controlled by the DMK government, all dead people names are there in the voter list. And even I don't know that same person, 3-4 places, his name is there in the list, voter list. Therefore, like that, they are using muscle power and everything. They are voting many places, and it is against the democratic system. Sir, we lost the government, the previous year, 2021, our assembly election, only margin of less than 3 lakh votes. But if you go through the record, the DMK party, which using this kind of list, voter list, they have lakhs of votes. They have many places, they have voted wrongly. The same person is voting many places in Tamil Nadu, many places. And also, dead people names also, the DMK people are voting there. Therefore, this way, your democratic system also misused by the existing system. Therefore, I am requesting this birth and certificate. No, I'm telling, because this is a serious matter, sir, I'm telling. Why? Because it is, when we are doing amendment, there must be a digital system. It may be perfectly recorded. Not only birth people, even existing name will also, it may be perfectly recorded. Otherwise, the misuse what is happening in Tamil Nadu by the present government, that must be stopped. Therefore, that is why our Edapadi Padinchami, which has a lot of popularity and our full support, but because of the misuse of the voter list, because you have mentioned the voter list, must be prepared. Reddy. Mani V. Vijay Sai Reddy. Sir, 1 minute, sir. I, on behalf of my party and my leader, YS Jagannath Reddy Garu, I raised to support this bill, sir. In fact, sir, my only request in this regard is, Andhra Pradesh government, under the stewardship of our beloved Chief Minister, has opened the Gram secretariats, that is village secretariats, and for every 50 households, there is one volunteer, and every volunteer under whose jurisdiction these 50 households come, volunteer will personally go to each and every house and verify with them whether birth certificate or death certificate is issued,
as the case may be. And the door delivery of birth certificate and death certificate are being issued as of now, sir. This is the procedure what we are following after proper verification. So the database, national database is being created, and I request the Honorable Minister to connect the data that is being collected by this respective state governments and also deaths and births, and incorporate them in the national database. And also the point which I would like to emphasize in this regard is the database that is created at the center should not be misused or leaked to unwarranted persons, sir. This is very, very important. I request the Honorable Minister to ensure that there will not be any database leak. And with this, we support this bill. Thank you very much, sir. थैंक यू विजय साई रेड्डी। माननीय मंत्री जी, माननीय नित्यानंद राय जी, आपका जवाब। महोदय, अभी कई माननीय सदस्यों ने बहुत ही बहुमूल्य और उचित सुझाव दिए हैं। माननीय मोदी जी की सरकार जन सुविधा के लिए पारदर्शिता के साथ उनको बिना किसी परेशानी में डाले उनके काम में सुचारू ढंग से मदद की जा सके, ऐसी नीति के साथ काम कर रही है। महोदय, यह संशोधन विधेयक जब लाने का विचार हुआ तो यह सभी राज्यों, केंद्र शासित राज्यों, सभी संबंधित मंत्रालयों एवं सभी संबंधित विभाग पर व्यापक विचार के पश्चात ड्राफ्ट तैयार किया गया। जब इसके ड्राफ्ट तैयार किए गए तत्पश्चात यह पब्लिक के लिए पब्लिक डोमेन में भी रखा गया और इस पर जो भी विचार आए उस पर को भी ध्यान में कहीं न कहीं से किसी रूप में रखा गया है। इससे इस विधेयक के माध्यम से जन सुविधाएं बढ़ेगी, जनमानस की सुविधा, तकनीकी प्रगति, सरकार की जरूरतें जो जनहित में होती है उसको ख्याल में रखते हुए यह संशोधन विधेयक लाई गई है। यह जन मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया सरल और जवाबदेह होगी, योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगी, न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप और प्रभावी प्रशासन के साथ साथ सरकार को विभिन्न योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। महोदय, यह डिजिटल होगा। पहले एक फिजिकल रजिस्टर में यह डेटा तैयार होता था जो बहुत तरीके से रखना उसको बहुत संभव नहीं हो पाता था और शिकायतों को दूर करने के लिए रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार जन शिकायत निवारण हेतु अपील भी कर सकते हैं। एक अभी माननीय सदस्य द्वारा बताया गया डेटाबेस के संबंध में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर इसका डेटाबेस बनाने की आवश्यकता है ताकि पब्लिक सेवाओं को और सामाजिक फायदे में इसका उपयोग किया जा सके। महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इसमें है कि यह एक ऐसा एक डॉक्यूमेंट होगा, एक ऐसा प्रमाण पत्र होगा जो किसी भी समय में किसी व्यक्ति को जन्म या मृत्यु की तारीख को प्रमाणित करने में यह बहुत ही कारगर डॉक्यूमेंट होगा, चाहे वह नौकरी में जाए, चाहे वह लाइसेंस लेने जाए या किसी शिक्षण संस्थान में वह दाखिला के लिए जाए या अन्य किसी काम के लिए जाए जहां वहां उसके स्थान और तारीख को सत्यापित करना हो। एक महत्वपूर्ण विधेयक में यह भी है इसका महत्व कि आपदा में मृत्यु प्रमाण पत्र पर विलंब हुआ करते थे, जिसके कारण आपदा पीड़ितों को मृत्यु प्रमाण पत्र न मिलने के कारण उसको सुविधा देने में भी और उस तक सेवा पहुंचाने में दिक्कतें होती थी, इससे दूर होगी। और महोदय, जन मृत्यु पंजीकरण के पश्चात 7 दिनों में प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है, जो मैं यहाँ रखा हूँ। महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, इस महत्वपूर्ण को सदन पास करे, इसके लिए मैं निवेदन पूर्वक आग्रह करता हूँ। Please, no. I shall first put the amendment moved by Dr. John Betas. No. I shall first put the amendment moved by Dr. John Betas for reference of the registration of births and deaths amendment bill 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. Please. The question is that the bill further to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969 as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha consisting of the following